ठीक है. सो टुडेज केस स्टडी इज अबाउट डीपॉपुलेशन एंड माइग्रेशन. डीपॉपुलेशन एंड माइग्रेशन. ठीक है. माइग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो तो हर साल ही आएगा आपका. रेगुलरली दे आर आस्किंग अबाउट माइग्रेशन बिकॉज अभी पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके माइग्रेशन इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट यू कैन टेक इनटू अकाउंट. और वी हैव पिक्ड अप पिथौरागढ़. पिथौरागढ़ इज अ प्लेस इन उत्तराखंड. इट्स इन उत्तराखंड. ठीक है. तो यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू इन केस स्टडी. केस स्टडी में यू हैव टू राइट 2 to 3 लाइन्स प्लस 1 or 2 लाइन्स टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट विद सम डेटा. तो पहले एक बार हम जो है मैप देख लेंगे. मैप ऑफ उत्तराखंड. सो आई एम ड्रॉइंग अ रफ मैप. ठीक है. दिस इज अ रफ मैप ऑफ उत्तराखंड. और मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूं. वी हैव सम. एक तो फिजियोग्राफिकली इफ यू सी द मैप, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द गढ़वाल रीजन. गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड. और ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज गैरसैंण. एंड दिस वन इज कॉल्ड एज कोमाहू. ठीक है. इसको बोलते हैं कोमाहू पार्ट. और बीच वाला गैरसैंण एंड दिस वन इज गढ़वाल. ठीक है. तो कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं पहले. यहां पे है एक. वी हैव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. टू द फर्दर वेस्ट ऑफ इट वी हैव यहां पे वी हैव बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री and Yamunotri. These are the glaciers. गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर्स, केदारनाथ, बद्रीनाथ. ठीक है. यहां पे वी हैव वन मोर पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क. गोविंद पशु नेशनल पार्क. और यहां पे वी हैव यमुनोत्री नेशनल पार्क ऑल्सो. यमुनोत्री नेशनल पार्क. ठीक है. डबल वॉइस एंड इको. इज इट इकोइंग ओनली फॉर आशुतोष और फॉर एवरीवन? यहां तो नहीं हो रही है आशुतोष इको. इको हो रही है क्या साउंड? आई थिंक देयर माइट बी सम इशू एट योर एंड. ठीक है. यमुनोत्री नेशनल पार्क. और यहां पे भी वी हैव अ स्मॉल नेशनल पार्क दैट इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी. यहां पे वी हैव राजाजी नेशनल पार्क. ठीक है. जस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ उत्तराखंड. और इस साइड पे वी हैव सहारनपुर ऑफ यूपी. और यहां पे वी हैव अ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट नो पासिस. ठीक है. पासिस भी हैं. वी हैव यहां पे थाला पास. ठीक है. यहां पे वी हैव
माना पास, नीति पास, एंड अनदर वन इज लीपू लेक। ठीक है, और क्लोज टू दिस लीपू लेक पास वी हैव अ पिथौरागढ़, यहीं पे ही है पिथौरागढ़, बिल्कुल इन कुमाऊं रीजन। पिथौरागढ़ इन कुमाऊं रीजन। ठीक है। प्लस उत्तराखंड इज ऑल्सो फेमस फॉर प्रयाग्स। प्रयाग्स मीन्स द पॉइंट वेयर टू रिवर्स आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग, और वी कैन से द टू रिवर्स आर कॉन्फ्लुएंसिंग। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कपल ऑफ टाइम दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी ऑल्सो। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर कर रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो फिर इसको। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, दीज आर द places of glaciers where some important streams are originating and they are moving ahead from this point। यहां पे मैं बना देता हूं ऐसा करके कि वी हैव बद्रीनाथ, इस साइड पे वी हैव केदारनाथ, यहां पे वी हैव गंगोत्री, एंड लास्ट में वी हैव यमुनोत्री। ठीक है। फ्रॉम बद्रीनाथ अ रिवर originates and its name is river Alaknanda। This is river Alaknanda, and this Alaknanda is being joined by another river. This is called as Dholi Ganga। ठीक है। Alaknanda is being joined by the river Dholi Ganga at a place called विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे अगर, तो अलकनंदा ही है ये। अलकनंदा विल बी जॉइंड बाय अनदर रिवर, दैट इज रिवर नंदाकिनी। दिस इज नंदाकिनी रिवर, and this point is called as नंद प्रयाग। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज नंद प्रयाग। ठीक है, इसको इधर कर देता हूं। फिर उसके बाद अगेन द सेम अलकनंदा मूव्स अहेड, एंड अगेन अलकनंदा विल बी जॉइंड बाय अनदर रिवर, दैट इज पिंडर गंगा। ठीक है, दिस इज रिवर पिंडर, और पिंडर गंगा भी बोल देते हैं इसको, एंड इट जॉइंस हेयर। दिस इज कॉल्ड एज कर्ण प्रयाग। ठीक है। फिर अलकनंदा थोड़ा आगे और चलेगी, एंड दिस टाइम फ्रॉम रिवर फ्रॉम ग्लेशियर केदारनाथ a river will be originating and its name is river Mandakini, and this Mandakini will join it here। This is river Mandakini। ठीक है, this place will be called as रुद्र प्रयाग। ठीक। गंगोत्री से भगीरथी, रिवर भगीरथी is having a source in गंगोत्री ग्लेशियर, और भगीरथी ज्वाइन करेगा अगेन एट अलकनंदा यहां पे। दिस इज कॉल्ड एज देव प्रयाग। ठीक है, और फिर जब वो नीचे आ जाएगी बिल्कुल प्लेन्स में, तो यहां से निकलेगी यमुना, एंड यमुना जॉइंस रिवर गंगा, आपका आप जानते हैं इलाहाबाद में, दैट इज द प्रयाग नाउ। ठीक है, वंस दिस अलकनंदा कम्स इनटू द प्लेन्स नियर हरिद्वार, इट इज बीइंग कॉल्ड एज गंगा, और उसके बाद फिर गंगा जो है फाइनली जॉइंस रिवर यमुना एट इलाहाबाद और प्रयाग। ठीक है, तो लिखो इसको एक बार।
ठीक है, ये प्लेसेस के नाम है, प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग. These are the names of places where the rivers are confluencing or meeting at a point. बना लो, बन जाए तो बताओ. बन गया? बना रहे हैं आप या बन चुका है? हो चुका है. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द केस स्टडी. दिस केस स्टडी you can use it in a theme of depopulation, you can use it in a theme of migration as well. Depopulation and migration. देखिए, already I have shown you in a map Pithoragarh. Pithoragarh is a place in hilly areas in Kumaon region, and this is very close to the Lipu Lake. जो आपका Lipu Lake pass है, that is already shown in the map. This place before 1960s तक जो था, basically this place is inhabited by tribes like Bhotias. Bhotias tribe are a major population that is being found in Pithoragarh. And with the use of Lipu Lake pass jo tha, this is being utilized by the common people because at that time India and China, they have an amicable relationship. अच्छे खासे ties थे, तो people from this side moving out to that side, and they were trading in the dairy products like milk, ghee, and vegetables and all. ठीक है, but once this war broke out with China in 1962, due to which the Lipu Lake Pass closed. ठीक है, Lipu Lake Pass was closed. A lot of people who were relying on this as a profession because their livelihood entirely depended upon the barter or trading activities with the Chinese people. So the first phase of migration started from this period. ठीक है, this was the first phase of migration. First phase of migration of people of Pithoragarh, when the Chinese government has closed down the Lipu Lake Pass, which was the major transportation or major route of connectivity between the people of two countries. उसके बाद government realized that this particular place is a strategic place and this is vulnerable to the Chinese. So that's why government came out with a plan that now we will set up a cantonment area in Pithoragarh. So cantonment area में भी उन्हें they have to acquire lot of lands. Lot of lands have been taken from the locals. Again, people got an idea कि यार land गया तो हमारा agriculture land गया है. Now for few people, very few people again migrate out of the Pithoragarh. ठीक है, but yes, this time they got an idea कि because land तो गया है, but now we are getting an employment in armies. So armies started recruiting the people of Pithoragarh as well as other people of the Uttarakhand, क्योंकि जहां पे आर्मी कैंट बन जाते हैं वही रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं, वहीं पे आपकी भर्ती चलती रहती है फौजियों की और सिपाहियों की. तो दिस आर्मी कैंटोनमेंट बिकम द मेजर रिक्रूटमेंट ग्राउंड फॉर मेनी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड एंड यंग वंस जो यूथ में थे वो. तो लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइन्ड द आर्मी इन उत्तराखंड. सो इस फेज में क्या था कि उत्तराखंड इकोनॉमी, एज लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग द मिलिट्री और आर्मी, दिस मेड द उत्तराखंड इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी. ठीक है, इसको मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोलते हैं. बिकॉज क्यों मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोलते हैं? बिकॉज एट दैट टाइम द ओनली वे द सोल्जर्स आर सेंडिंग आउट द मनी टू देयर फैमिलीज वाज थ्रू मनी ऑर्डर्स. तो जो भी आप कमाते थे या जो भी सेविंग करते थे, दे आर सेंडिंग इट टू देयर फैमिलीज दैट हैव बीन लिविंग इन पिथौरागढ़ एंड अदर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड. और इनफैक्ट डेटा कहता है कि 1 in 3
families of Pithoragarh had either any members as their any member in defense services or their relatives might be in defense army and all. ठीक है, 1 in 3 जो है आपका families में you will find there is someone either the relative or any member of that family who is working in the defense services. तो ये second phase of migration था, sorry first phase of migration था. Now the second phase of migration came after 1991. Second phase of migration started after 1991 because after 1991, a lot of global warming incidents have been revealed. A lot of changes have been taken place because of the climate change. And since 1991 to till now, what we are witnessing, every year, this hilly state is being hit by some disasters. Okay? Due to global warming, climate change, state had witnessed natural disasters almost every year. ठीक है, हर साल नहीं तो एक साल में एक बार, 2 साल में एक बार जो है होगा ही कि कभी क्लाउड बर्स्ट हो गया, कभी फ्लड्स आ गए, ठीक है, कभी एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स. तो सिंस 1991 से अब तक बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज state had witnessed some natural disasters and this was the reason for migration. This was again the reason for migration because migration यहाँ पे जो है, migration always happens in stages. ऐसा नहीं है कि one go में entire people will move out unless there is a war. ठीक है, तो it is happening in phases. Now comes the third phase. Third phase of migration in Pithoragarh starts when a new state was created. Uttarakhand, earlier it was a part of UP and Uttarakhand was created in the year 2000. And soon after its formation, the new government has formed its industrial policy. और जो industrial policy थी, that was completely biased towards the plain areas. क्योंकि industries का भी interest उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा. Because industrialists never wanted to set up any factories in the hostile terrains में, because that will increase their investments also. ठीक है, lot of burden of investments and other things are there. So that was जो policy थी, जो industrial policy थी, that was biased in favor of plain areas. The new industrial policy was biased in favor of plain areas as those places were more enticing for industrial investments. और उसका रिजल्ट आया भी था, जैसे आप देखोगे तो रुद्रपुर, उधमपुर, यहां पे आपको काफी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी. ठीक है, अगेन दिस वाज a setback for hilly area or the people who are living in hilly areas, and this was the point, the third phase was the point. Earlier क्या हुआ था, only individuals were living out, but due to this third phase, now families are moving out of the Pithoragarh. Due to this third phase, families, not individuals, families, not individuals are leaving Pithoragarh in search of better life, employment and all. ठीक है, in search of better life. ठीक है, so we can see that the migration is happening in phases, in stages. पहले कुछ थोड़े लोग गए, then again second wave started and the third wave where people have completely felt कि now
government is no more serious for us and now we have to move out with the entire families. तो इसके कुछ consequences रहे हैं पास्ट में भी, जैसे you will find कि lot of land is fallow. ठीक है, ये आपके consequences हैं इसके. Land is fallow plus agriculture got stagnated. Agriculture got stagnated. There is increased human wildlife conflict in these areas. ठीक है, people from other state, people from UP reaching out and working there as a laborers. People from UP are working as laborers here. ठीक है, and there are many ghost villages. Villages are now turning into the ghost villages. ठीक है, कोई घोस्ट विलेज मतलब कुछ ज्यादा लोग जहां नहीं रहते उसको घोस्ट विलेजेस का नाम दिया है. And as per the data that have been released by 2011 census, 2011 census says that by the end of 2011, 1048 ghost villages were in Uttarakhand. ठीक है, and 101 villages were there which was completely deserted. Completely deserted means there was not even a single person there. 101 villages में. Although this number जो है अभी का जो मैंने देखा है हिंदू के एक उसमें आर्टिकल में 1500 कुछ पहुंच गया है, 1500 पहुंच चुका है. But we are going with the census. The 2011 census says that there were 1048, that is 1048 ghost villages in Uttarakhand and 100 villages which are completely deserted, means not even one person is living there. ठीक है, तो दैट्स इट. इसमें इतना ही है, दो तीन फैक्ट्स हैं दैट यू कैन राइट एंड यू हैव एंटायर स्टोरी के हाउ इट हैज बीन अनफोल्ड इन द पास्ट. ठीक है, दैट्स इट, ओवर. ठीक है, ऑनलाइन डन. Okay, then I am ending the session here. I hope all of you have done this. Thank you.